We hear you, and we don't think that you're a very nice spirit because you're making noises, you're throwing. It seems to be headed right for Chad, and I have no way to warn him. Is that you making all the noise? Holy oh my god! Holy Stop! Stop! Ugh, nay, I'm sorry, मैं तो ये कभी नहीं कर सकती थी. I even watched them on mute just to make sure I wouldn't give myself a heart attack from all the jump scares. मैं सबसे बड़ी डरपोक हूँ. Horror movies में देख सकती हूँ मगर ऐसे. But that still counts, right? Right? Johnny's क्या हो रहा है? मैं आपकी host हूँ Ayman Hassan and welcome back to another video here at Top 10 Hindi Videos. आपने ये video request की और हमने deliver की and you guys know what I'm about to say, so why don't you say it with me? अगर ये channel आप सबको पसंद आ रहा है, content पसंद आ रहा है, मेरा मुंह पसंद आ रहा है, then please remember to subscribe. We're going to be posting daily videos very soon, so I'd love to see you all there. But without further ado, let's do this. This is the top 10 haunted places in India. 10 पे है the Bhangar Fort in राजस्थान. मुझे ये समझ नहीं आती कि सारे deserted castles, forts वगैरह सब haunted क्यों होते हैं. अब इस fort के ऊपर दो अलग-अलग कहानियां हैं. The first is about a saint called Baba Balawnath who lived within the fort area. Emperor Madhu Singh ने उससे ये पूछा कि मैं यहाँ सिटी बना सकता हूँ. बाबा ने हाँ जरूर कह दिया था मगर एक condition पे. The shadow of the emperor's palace should never fall upon the fort, and if it did, then the city would crumble to pieces, and so it did. Dun dun dun. दूसरी कहानी कुछ ऐसे जाती है. एक प्यार की कहानी है. कल हो न हो ही समझ लो, लेकिन प्यार थोड़ा कम और tragedy थोड़ा ज्यादा. Even though that movie was pretty bloody tragic anyway. इस कहानी में बाबा एक विजिट होते हैं और उसको रत्नावती जो भंगर की प्रिंसेस थी से प्यार हो जाता है. He sees her buying इत्र at the bazaar and replaces it with a love potion. मगर हमारी हीरोइन कोई बेवकूफ नहीं है. She realizes what's going on and throws a potion at a nearby boulder that rolls on top of Baba Ji, killing him. मरने से पहले बाबा जी ने फोर्ट को कर्स कर दिया था इस उम्मीद से कि भंगर पूरी तरह destroy हो जाए. Talk about salty. People say they hear screams coming from inside the fort all the time, and it's actually forbidden to visit the fort after sunset. Paranormal activity aside, they still promote it as a huge tourist destination. Not where we have the Fern Hill Hotel in Ooty. The hotel was shut down due to the hauntings that kept taking place and scaring guests. Choreographer Saroj Khan ने वहाँ पर एक रात गुजारी अपने डांसर्स की टीम के साथ. उस रात किसी को भी नींद नहीं आई क्योंकि ऊपर वाली फ्लोर से बहुत अजीब से आवाजें आ रही थी. आवाजें जैसे फर्नीचर यहाँ से वहाँ हिल रही थी. एक डांसर ने फौरन रिसेप्शन को फोन मिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. Then they went to complain and the receptionist took them outside and showed them that there was no floor above them to begin with. Fern Hill Hotel की कहानी बहुत मशहूर हो गई और उस पे बिपाशा बासु की फिल्म राज भी बनाई गई थी. During the shoot, the recordist heard a girl quietly singing when, looking around, there was nobody singing at all. During another take, a photograph on the wall kept moving from left to right before correcting itself on the wall all by itself. Never going there. Art पे we have GP Block in Meerut. The haunted house on GP Block has been abandoned for as long as locals in the area can remember. लोग कहते हैं कि जब ही कोई घर पास आता है, रूफ पे काफी खौफनाक आदमी बैठे होते हैं, लेकिन ये असल इंसान नहीं है. इनको घोस्ट माना जाता है. बहुत लोगों ने ये कहानी रिपोर्ट की है. जो आदमी है वो बहुत क्लियर नजर आते हैं अपने दुनिया में मस्त. The most common ghost sightings are a group of men sitting around a table with a candlelight drinking some alcohol and chilling. And the other story is बहुत सारे लड़कियां जिसने लाल ड्रेसेस पहने हुए हैं और वो घर से अंदर बाहर जा रहे होते हैं. I mean, ghosts मजे कर रहे हैं, enjoy करने देते हैं, हमें क्या मसला है. साथ पे we have the Bengal swamps, or rather the Alia ghost lights that are found there. सबका माना ये है कि जो बत्तियां चमकती है वो एक फिशमैन की आत्मा है. एक रात वो रास्ते से गुम हो गया और उसी रात मर गया. काफी लोगों ने ये बत्तियां देखी हुई हैं. It's said that whichever fisherman follows the lights usually gets lost and ends up dying, and for those who don't die, well, they just go a bit insane. Locals ने बहुत लाशें देखी हुई हैं पानी में और पानी के आसपास. Sometimes the lights confuse the fishermen, while other times they help them avoid future dangers. So it really just depends on what the mood is of the fisherman's spirit that day.
पे। 6 पर we have the Bridge Raj Bhavan Place in Kota, राजस्थान। अब ये एक हेरिटेज होटल बन गया है, लेकिन पहले जमाने में पैलेस होता था और पैलेस का मालिक था Major Charles Burton. During the mutiny of 1857, his palace was sieged by the sepoys who were looting the place while the major and his 2 sons were locked in a room upstairs. पूरे 5 घंटों के बाद मेजर ने सरेंडर कर लिया था, लेकिन सब तीनों का कत्ल होना ही होना था। लोग कहते हैं कि मेजर का भूत अभी तक होटल में कहीं ना कहीं घूम रहा है। गार्ड्स जो वहाँ काम करते हैं कहते हैं कि कभी कभार उनको कुछ अजीब अंग्रेजी आवाजें आती है। The voice tells the guards to stop sleeping on duty or smoking, and they say it even slaps them when they fall asleep. 5 पे we have the National Library located in Kolkata. ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे haunted जगह है। Belvedere House, as it was known before, was gifted to Lord Warren Hastings. Hastings का कहना था कि उसकी बीवी के 2 शौक थे, किताबों का शौक और cleanliness का शौक, aka OCD। कुछ चौकीदार कहते हैं कि उनको फुटस्टेप्स की आवाजें आती है जब वो ड्यूटी पे होते हैं। कोई जरूर चेक कर रहा होता है to make sure that the books are in the right place। और librarians जब ड्यूटी में होते हैं, उनका कहना है कि कुर्सियां इधर उधर होती है और किताबें शेल्फ से गिरते रहते हैं। While restoring the library, engineers stumbled upon a giant 1,000 square foot room on the ground floor with no entrance. They scoured every inch of the place to find a crack or trap door or opening, but came up with absolutely nothing. But ये काफी आम सी बात है, क्योंकि पुराने जमाने में ब्रिटिशर्स prisoners को कब्जे में रखते थे अंडरग्राउंड चेम्बर्स में। तो शायद अगर सोचा जाए, ये भी एक डेथ चेम्बर हो सकता है। So either it's haunted by a strict book lover or a bunch of tortured souls. Great. हम तो either way मरे। 4 पे we have the Kundan Bagh Witch's Lair in Hyderabad. इस घर में 3 चुड़ैलें रहती थी, पर ये तो आप नाम से ही शायद गैस कर पाते। एक रात घर पे किसी ने चोरी की कोशिश कर ली, लेकिन चोर को तीनों चुड़ैले की लाशें मिली। वो बहुत घबरा गया और फौरन पुलिस स्टेशन भाग गया। This I don't get, because how did he report what happened without having to explain why he was in that house to begin with? कुछ दाल में काला है। Autopsy report में लिखा हुआ था कि तीनों काफी महीने से expired थी before the break-in, which is strange considering the neighbors claimed to have seen candles being lit in the house at midnight, and the mother and her 2 daughters walking around on the balcony as recently as the day before the break-in happened. So जो भी काला जादू ये लड़कियां कर रही हैं, seems to be working well for them. 3 पे we have the Ramoji Film City in Hyderabad. ये बहुत बड़ा स्टूडियो था। 1996 में फिल्म सिटी में 2 होटल्स भी थी, 47 साउंड स्टेजेस, काफी डिटेल सेट्स जैसे कि रेलवे स्टेशन, टेम्पल्स और एक जंगल का सेट भी था। It was built on the war grounds of Nizam, so it's said to be haunted by dead soldiers. People have reported seeing the light fixtures fall from the top of buildings frequently, and that the men in charge of these lights get pushed mysteriously off the ledges. बहुत लड़कियां ने रिपोर्ट लिखा हुआ है कि बाथरूम डोर्स पे कोई नॉकिंग करता रहता है, और सबको ये बहुत अजीब लगती है क्योंकि सब लड़कियों का कमरा लॉक्ड होता है। उनको कपड़े फाड़ने की आवाजें भी आती है और शीशा टूटने की भी आवाजें आती है। And if food was ever left in a room, it would be found scattered everywhere later on. That's so eerie. Imagine shooting there. I'd be terrified regardless of whether it was night or day. 2 पर we have Putalbari, a haunted house full of dolls in Kolkata. Cue the movie Chucky. Putalbari got its name from the classical statues ornamenting the top of the house. ये घर एक warehouse होता था, मिर्चे के लिए, चावल के लिए, सिल्क के लिए, etc. और जो अमीर घर के मालिक थे, वो सबसे ऊपर फ्लोर पे रहते थे. It's said that they used to sexually exploit these girls and killed some of them as well. लोग कहते हैं कि वो लड़कियां अब पुतलबारी को हॉन्ट करती है in order to seek justice for what happened to them. मुझे लगता है कि वो बहुत सही कर रही है। लोगों के बस पीछे पड़ जाए और उनको जीना हराम कर दे। I'm with you girls. During the night, people can hear the clinking of anklets and bangles as well as shrill laughter. I mean, as creepy as it is, I definitely support the girls in their mission. At our number 1 podium, we have the Savoy Hotel in Uttarakhand. It feels like this hotel was just meant to be haunted, as weird as that sounds. In 1911, a British spiritualist called Frances Garnet Ohm came to stay at the hotel to visit her friend Eva Mount Stephen. एक रात तब ईवा होटल वापस आई, फ्रांसिस अपने होटल कमरे में मरी हुई मिली और दरवाजा लॉक्ड था। ऑटोप्सी ने रिवील किया था कि फ्रांसिस को किसी ने पॉइजन किया था प्रूसिक एसिड से। ईवा was arrested for poisoning Francis but was found not guilty. और सबसे खौफनाक बात ये है कि जो डॉक्टर इस केस में काम कर रहा था, उनको भी कुछ महीने बाद किसी ने पॉइजन कर दिया था स्ट्रिचनाइन पॉइजन से। लोग कहते हैं कि फ्रांसिस की आवाजें होटल में आती जाती हैं अभी भी। This case was so well known that Rudyard Kipling mentioned it to Arthur Conan Doyle, who then mentioned it to Agatha Christie, who actually made a book about it called The Mysterious Affair
Claret styles. A lot of Chinese whispers, I know. And that brings us to the end of today's video. I actually had a really good time researching this because I feel like each case had such a strong foundation of being haunted. तो आप किस जगह जाते अगर आपके पास choice होती and you absolutely had to? I'd probably choose the swamps because all I'd have to do is just not go fishing, which I wouldn't be planning on doing anyway. Hope you guys enjoyed. See, we do read the comments. You guys really requested this one and here it is. Remember to subscribe karo or mere saath banter bhi karo, Instagram pe follow karo, but that's all for today. I've been your host Ayman Hassan and I'll see you next time. Khuda Hafiz.